30 days of travel on the road. It's been absolutely mental. मैंने बॉम्बे से राजस्थान से उत्तराखंड से नेपाल से सिक्किम, आसाम और अभी मेघालय. On my way to Cherrapunji and I dropped my camera again for stupid speed breaker. अभी एक नया इशू आ गया है, ब्रेक पैड जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. Damn dude. The next morning मैं निकला सिलगुड़ी के लिए, which is around 4 hours from Gangtok, और जो मेरा पहला pit stop होगा before Guwahati, Assam. I stopped at this lovely breakfast place which apparently has a view to die for. And what's better than to enjoy some food with friends? Oh, ये लोग यहाँ पर है. What's up, bro? What's up? Hi guys. नाम निखिल बात है. हेलो सर, देवराज. आप ड्राइवर हो? जी. अरे नमस्ते. आप फेमस हो गए अभी. जी, थैंक यू. 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको हाय बोल रहे हैं. थैंक यू सो मच. इनको बताया मैं. क्या? डायरेक्टर आ रहे हैं. अरे ही इज वेरी एक्साइटेड. चल रुक जा, मैं जरा हेलमेट पहन के बैठता हूँ. A few moments later. I'll see you guys. See you. Drive safe, bye. If you've not already traveled from here, let me tell you that like most roads in India, it does not disappoint. It's beautiful and all, but honestly, I prefer the roads down south. What do you think? Say hi. All safe. I have arrived in Siliguri, guys. It's a nice, beautiful ride from Gangtok to Siliguri. Almost like 4-5 hours, but really nice ride. Putting my stuff here and everything here. But yeah, loving it. This lovely Airbnb kind of place is totally worth it. और कुछ 300 रुपया एक्स्ट्रा पे करने के बाद यहाँ होम कुक मील्स मिलता है, which is absolutely पैसा वसूल. Out and I'm out of here, सिलीगुड़ी से, और हम जा रहे हैं वापस. What a beautiful day. हम जा रहे हैं वापस नहीं, गुवाहाटी जा रहा हूँ. So that's gonna be fun. Be there for like a couple of days and गुवाहाटी के बाद हम जाएंगे mostly क्या शिलोंग ही जा रहा हूँ. शिलोंग जाके फिर वहाँ से देखते हैं क्या प्लान है. वहाँ से एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं है. लेट्स सी. अर्ली मॉर्निंग यहाँ से रेडी होकर निकला मैं आसाम की तरफ. इन द लास्ट 30 days I haven't come across any roads in India that is bad, these included. People ask me how I do it. Solo ride, heavy bike, long journeys. थकावट नहीं होता, fatigue, boredom. My answer, not at all. I mean, sure, there are rare moments where I miss having a riding buddy. Usually when or if I'm in trouble. But most of the times, solo riding से ज़्यादा liberating और कुछ नहीं हो सकता. True story. Soon enough, I came across the massive Coronation Bridge, which suspends over the Teesta River. I swear, यहाँ से bungee jumping करना must be so much fun. Siliguri is known as a gateway to Northeast India and is famous for the 3 T's: tourism, timber and tea. और यहाँ टी एस्टेट्स हर गली नुक्कड़ पे दिखते हैं. मैंने देख लिया, अब आपकी बारी. क्यू म्यूजिक. I'm having my breakfast right now. It's super cold. 9:30 हुआ है. 7 बजे निकला था मैं मेरे सिलगुड़ी से. And I've covered a decent distance, man. The roads are fantastic. आपने देखा. And I covered a decent distance. अभी should take me another, I don't know, I'm guessing another 7-8 hours to reach. 7 hours to reach. So still a long way to go. But loving it. Love the ride. It's quite nippy, quite very chilly. बहुत ठंडा हो गया actually यहाँ पर अभी. But I'm pushing on, man. Pushing on.
On the way, I stopped at this cute place called Dabri Tea Cafe, जो बिल्कुल हाईवे से लगकर है, and which is owned and operated by a family from Mumbai. यहाँ चाय डायरेक्टली उनके खुद के एस्टेट से आता है, which you can see right here. Just how I like it, direct from the source. Damn pretty, yeah. Dabri Tea Lounge, that's what it is. Just entered Assam. आसाम बॉर्डर एंटर करके ही स्टॉप फॉर लंच, जहाँ मेरे फैट बॉय के फैंस ने मेरी मैंडेटरी इंट्रोगेशन शुरू कर दी. What is your name? निखिल. Okay. Thank you. कैसे लगा आपको आसाम? बहुत बढ़िया यार. अभी तो एंटर किया हूँ, बट मैं बहुत अच्छा सुना हूँ. अभी देख रहा हूँ. मैं वीडियो ले लूँगा. हाँ ले लो भाई. करीब रात के 9 बजे आफ्टर राइडिंग फॉर 14 आवर्स आई अराइव्ड इन गुवाहाटी. गुवाहाटी. और ये है तो मेरा बाइक यहाँ पर पार्क है बेसिकली. और अभी मुझे पता चला कि द टायर्स आर अ लिटिल वोन आउट ऑलरेडी. ब्रांड न्यू टायर्स थे बट इट्स ऑलमोस्ट वोन आउट. बाय द वे लवली प्रॉपर्टी, लव इट. सब पुराने फैट बॉय के टायर्स यहाँ पर लगे. सो दैट्स व्हाई आई पिक द प्लेस ऑब्वियसली. वेरी प्रिटी प्लेस. यहाँ पर पीछे बागटा टाइप का एरिया भी है बैठने के लिए. यहाँ पर मैं कल रात को बैठा था. टुडे मार्क्स द 30th डे ऑफ माई ट्रैवल. 30 days ऑफ ट्रैवल ऑन द रोड. इट्स बिन एब्सोल्युटली मेंटल. इसके बाद हम शिलोंग जाएंगे, मेघालय के बाद अरुणाचल में कहाँ जाना है मैंने डिसाइड नहीं किया है. बाय द वे ही इज़ द मैनेजर ऑफ द प्लेस. हाय बोलो. हाँ अभी बाइक निकालना है, मुझे हेल्प करना पड़ेगा आपको. हाँ आई एम गोइंग टू शो यू दिस प्लेस. बाय द वे फैंटास्टिक प्लेस. नाम क्या जगह का? कौन जगह? ये जगह का इसका आसाम होम हॉस्टल प्रोजेक्ट. आसाम होम हॉस्टल प्रोजेक्ट. वेरी नाइस. यहाँ का ओनर तुषार है ना कोई बंदा, एंड वो लंदन में रहता है. एंड ही इज़ मेड दिस प्लेस वेरी वेरी नाइस प्लेस. ये वो ओन करते क्या पूरा? वो मतलब उन्हीं का है ना. उन्हीं का है. लवली लवली पूरा बिल्डिंग बढ़िया है भाई. आराम से. अभी पीछे फास्ट करना था ना. हाँ हो गया. और सर निखिल. अरे यार अमन, नाइस टू मीट यू. ये है मैनेजर यहाँ के. से हाय. थैंक यू रमन. लवली प्लेस ब्रो. मुंबई अभी तो मैं बाइक वॉश करके आ रहा हूँ, बट दिस प्लेस इज़ फैंटास्टिक. बहुत मस्त है. गुवाहाटी में हो आसाम हॉस्टल प्रोजेक्ट में आना. इट इज़ फैंटास्टिक. आई विल गिव यू मोर डिटेल्स इन अ बिट. अभी फिलहाल बाइक वॉश करना है, बहुत गंदा है. आई डू दैट. थैंक यू रमन. कार वॉश राइट नाउ. थोड़ा TLC मेरे बाइक को भी देना है मुझे. खुद नहाना तो ठीक है, और बाइक को भी नहलाना चाहिए बीच बीच में. भैया है जो चलाते हैं जगह. हाँ भैया. नाम क्या जगह का? हमारा नाम हाँ कोरोना देखा. तो यहाँ पर गुवाहाटी में बाइक आप देख रहे हो. यहाँ पर गुवाहाटी में आओगे तो भाई यहाँ पर आना. बहुत सही जगह है. बड़ा सर्विस. बहुत स्पेशियस है, बहुत जगह है. बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आ सकते हो. बट मेरी बाइक ज़्यादा छोटी नहीं है वैसे. मेरे लाइफ के भारत देखो यात्रा में रिवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड वन ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू गुवाहाटी इज द ब्रह्मपुत्र. इस नदी के दर्शन के बाद आई मेड माई वे बैक टू द हॉस्टल रेडी टू लीव फॉर मेघालय. आई एम डन विथ माई गुवाहाटी लेग. आई एम हेडिंग टू शिलोंग नाउ. रमन जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. दिस इज द आसाम हॉस्टल प्रोजेक्ट. वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई सीन इन गुवाहाटी. डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. चेक इट आउट. फिलहाल मैं जा रहा हूँ शिलोंग. शिलोंग इज़ लाइक 2.5 hours. रमन जी बोल रहे 2 घंटे में पहुँचना चाहिए. 2 घंटे में पहुँचेंगे. तो देखते हैं. अभी एक नया इशू आ गया है कि मेरे को पता चला मेरा ब्रेक पैड जो है फ्रंट का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. तो थोड़ा डेंजरस है. बट वहाँ शिलोंग जाके मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा EBC का ब्रेक पैड, जो मुझे गुवाहाटी में मिल जाएगा. एंड आई हैव टू कम बैक हियर. एंड दैट्स द प्लान. तो प्लान थोड़ा चेंज हो गया.
पहले सोचा था डायरेक्टली शिलोंग से ज़ीरो वैली, बट अभी वापस आना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, ब्रेक पैड डालना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। सो बिकॉज मेरा टायर्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट गया है, आई डोंट वांट टू टेक अ चांस विद ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स को कुछ हो गया तो मेरा रोटर भी जा सकता है। रोटर तो छोड़ो, मतलब बाइक स्टॉप नहीं होगा। सो आई कांट टेक अ चांस, आई हैव टू गेट इट चेंज्ड। तो दैट्स द प्लान गाइस। थैंक यू रमन जी सो मच, यू आर अमेजिंग, हाई फाई एंड आई सी यू सून। मतलब 3-4 दिन में तो मिल ही लूँगा वापस आपको। ठीक है, टेक केयर। Fun fact, Meghalaya was originally in a happy marriage with Assam, but Meghalaya realized it was way too cool and decided to call it off on 21st January 1972. Shillong then became the capital of Meghalaya. For those who don't know, riding from Guwahati to Shillong is like riding from Mumbai to Lonavala. Same distance, except the roads are 1,000 times better and so is the scenery. Absolutely gorgeous. और please, ये मुझे पता है कि मैं बहुत बार कह चुका हूँ, but if only you would see it from my eyes, you would know. फिलहाल ब्लॉग से काम चला लो। Stopped at a lovely cafe in, what's this place called? And it's Cafe Fort Basil. Are you the owner? No, sir. You work here? I work here. Nice. Very cute cafe. Yeah. We are heading to Shillong. I already checked in to Zostel. I have to get in touch with somebody ASAP and figure out my brake pads. At least the front ones, rear वाला तो चल जाएगा, no problem. Basically, Assam का जो DGP है is one of our friends. DGP is obviously the Deputy General of Police, and he is here. And उसने मुझे बोला he can help me out. So let me see. I'll message him. I'll figure out somebody who can arrange brake pads for me in Guwahati or Shillong. Along with Shillong being a hill station, ये मेघालय की कैपिटल भी है and is also the headquarters of the East Khasi Hills. कहते हैं कि यहाँ के rolling hills reminded the British of Scotland and hence they called Shillong Scotland of the East. Bike is parked. अभी check in करके I will take off the bike. Let me see the property. It's so nice here. पूरा wood. Oh, damn nice. And this is the reception area. Whoa. As always, we have a map here. And who's? Oh, hi there. Hi. Hello. Thank you. What's your name? My name is Yafi. Oh, how nice. My name is Nikhil, and I'll be staying here for 3 days. I'll be troubling you for 3 days. Okay, sir. No problem. Oh, yeah. Check that out. This almost looks like a picture frame. Pretty cool space, huh? Fantastic view. और exactly यहाँ से I can see where I've dried my clothes. Very important to see exactly where I've dried my clothes. So yeah, that's where it is. मेरा brake pads, by the way, are brand new. तो मैंने इतना सारा hilly region में मैंने ride किया ना कि it just didn't last. I mean, not surprising. It's a heavy bike. बहुत ज़्यादा प्लस मेरे को कैरी कर रहा है, प्लस मेरा लगेज कैरी कर रहा है. So all that weight on the hilly regions, especially Gangtok and Darjeeling and all those places. नेपाल में इतना नहीं था, but Darjeeling, Gangtok में बहुत था. And अभी नेपाल में भी था. when I was going to पोखरा वहाँ पर भी था बहुत सारा hilly. But anyway, point is that it has run out in a record time of a month. कभी आज तक मेरे लाइफ में इतना जल्दी मेरा ब्रेक पैड्स वेयर आउट नहीं हुआ है. इट्स पीछे का भी बाकी है बिकॉज मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता. मैं ज़्यादा करके फ्रंट ही यूज़ करता हूँ. एंड फ्रंट इज़ लाइक आई एम सेइंग ऑलमोस्ट गॉन. आई थिंक 500 किलोमीटर्स मोर एंड इट बी डन. सो मैंने अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया एंड आई हैव ऑलरेडी अरेंज फॉर ब्रेक पैड्स. और आई रिप्लेस इट. अभी गुवाहाटी में जाकर रिप्लेस कर लूँगा उसको यार. दैट्स व्हाट आई डू. Got the brake pads. Talk Block again has managed to do it. They are sending it by speed post in a day or two to Guwahati. Guwahati में जो ब्रह्मपुत्र हार्ली डेविडसन है, which was owned by this guy called Mayank, जो अभी बंद है, अभी चालू नहीं है, but
उसका टेक्नीशियन जो है वहाँ अभी भी अवेलेबल है, वो गुवाहाटी में, तो मैंने वहाँ पर मंगवाया ओनर के घर पे। उसका टेक्नीशियन जो है वो फिटिंग करा के दे देगा। सो दैट्स द प्लान। टुमारो डे आफ्टर आई शुड बी एक्सपेक्टिंग द ब्रेक पैड्स इन गुवाहाटी। सैटरडे को मैं गुवाहाटी जाऊँगा यहाँ से चेकआउट करके, एंड आई गेट इट फिटेड। दैट्स द प्लान। बाय द वे गाइस, दिस इज़ 30-day ट्रिप। 31 days हो गया अभी, एंड it's a fantastic journey. If you're still watching this, thank you so much for all your support, all your love, man. This has been crazy. I've never done this in my life. Solo rider on a fat boy, all across North and Northeast India. And अभी तो मैं मतलब मुझे लग रहा है कि मैं मिडवे आया हूँ, अभी बहुत ज़्यादा लंबा जाना भी है मुझे. So very long road ahead. Totally like I feel like I'm on top of the world, literally on top of the world, but also metaphorically. I feel that I've achieved something. I can't even describe how crazy this experience has been. Riding a fat boy solo. इंडिया में तो ठीक है, चलो इंडिया में तो कर लेते हैं, बट नेपाल में भी मैंने किया. नेपाल में where I don't know the language, I don't know how it all functions there. That was crazy. Getting the permits done, getting the bike inside, custom वाले से गाली खाना वो सब मैंने किया. And yeah, I managed to get out of Nepal also in one piece, no problems at all. Only problem that happened was Kalimpong, the love of my life. गिर गया. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. वो उसकी गलती नहीं है. It's not meant for off-roading. I went inside a forest towards my friend's house, and गलती हो गई. as in वो curved rocks थे and no grip at all, no traction at all, and I slipped on it and the bike fell on the right. The bike is top heavy because of my luggage, so that matters a lot. Happens guys, happens. Gangtok, matlab I can't even begin to tell you how amazing Gangtok was. Lived there for like 7 days. I had planned initially 2 days. In fact, मैं sure नहीं था मैं Gangtok जाऊँ कि नहीं जाऊँ. But after going, I was like, man, this is the place you have to be. And I'm super happy that I did. And met some amazing people there. And we bonded so well. Solo trip में usually ऐसा होता है. You bond very good with other solo travelers. It was just crazy, man. Different cultures, different people. You learn so much about yourself. So much about yourself when you travel. It was just an amazing experience. Yeah. After Guwahati was also nice. A lot of traffic. Guwahati is one place where बहुत traffic था भाई. I mean, Guwahati was one place जहाँ पर temperature हाई हो गया था, वापस गर्मी हो गया था. पहली बार मुझे 30 दिन में पसीना आया था. That felt nice in a way, but then I think I'm a पहाड़ी now, legit पहाड़ी. मरना है क्या पोस्ट. I've done so many states. यहाँ से मतलब मैंने बॉम्बे से राजस्थान से उत्तराखंड से नेपाल से वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और अभी मेघालय. So been covering quite a few states. इसके बाद अरुणाचल करूँगा. अरुणाचल के बाद वेस्ट बंगाल अगेन, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद बॉम्बे है. So there's a long way to go. I am very close to New Year's and Christmas right now, or I actually wanted to spend it with my friends, my brother, all of them, and I don't know if I can make it on time, but let's see how it goes. ये भी मैंने पहले कभी किया नहीं है, traveling for so long solo, so man, might as well do it. And guys, if you have any questions, any doubts, I'm usually बहुत prompt to my comments में, and I'm also on Instagram. You can message me there. I always respond. If you have any questions about roads, about travels, about permits, about whatever it is जो मैंने अगर वीडियो में नहीं बोला है clearly, man, reach out to me. You'll have your answer. I figured out where I've got my love of travel from. School में maths, algebra, geometry में तो मैं zero था ही. But geography class में I remember looking at the textbook at those old paper maps of India and thinking to myself, ये lecture कब खत्म होगा यार? मारो, हमको मारो. I clearly remember being very intrigued when my teacher told us about this destination that was known as the wettest place on earth, besides my bathroom of course. क्या बोला तूने? और वो जगह का नाम था चेरापूंजी, or Sora as the local Khasi people call it. And now after all these years, riding to Cherrapunji on a motorbike, unbelievable. So to give you an idea, the most rainfall recorded in Mumbai is around 2400 millimeters. In Kerala, 40 to 100 millimeters. And in Cherrapunji, the most rainfall recorded is a mind-blowing 26,500 millimeters in 1 year. और जब मैं यहाँ आता हूँ, not a single drop of rain. But that doesn't take away the beauty of this place. I mean, this is literally influencer paradise. यहाँ के हर रोड पे आपको ऐसा लगेगा कि सागर शेरडेकर ने यहाँ व्हीली किया है. So to be honest, I was expecting a lot of people. Fortunately for me, यहाँ था सिर्फ मैं और मेरी fatty. On my way to Cherrapunji, and I dropped my camera again from the bike for stupid speed breaker जो मैंने देखा नहीं. You can see it there. And पिछले 10 मिनट से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा था. I was looking in this entire space, and that lovely lady there who is walking, you can see, she picked it up and she found it. It was actually on the other side of the road. यहाँ पर कहाँ पड़ा था? Literally just pooped my pants. Almost freaking lost my camera, and
या पूरा ट्रिप का फुटेज है अब तक, मतलब काफ़ी लंबे समय से सिक्किम से आई थिंक गैंगटॉक तक का पूरा फुटेज है मेरे पास. सो प्रीटी क्रेजी मैन, गॉट इट बैक. मैडम ये जगह का नाम क्या है? कौन सा? सेवन सिस्टर ना. पानी अभी नहीं है क्या? बारिश का टाइम आता रहेगा. नो पानी डालेगा. This is like a viewpoint. Damn dude. At 315 meters, the Seven Sister Waterfalls or Mosmai Falls are so tall कि अमिताभ बच्चन को शर्म आ जाए. अगर बारिश में आओ तो you would see 7 streams that team up to make the most glorious views happen. A nod to the 7 northeastern states of India. यहाँ से I made my way to these beautiful windy roads towards Kinrem Falls, another beautiful spot to shoot reels. And this is apparently the 7th highest waterfall in India. Oh, not bad. 7th highest. Okay. Not bad at all. I think you can go down and probably like touch the water, which is exactly what we're gonna do. Go down and touch the water. फील तो आना चाहिए ना भाई, फील तो आना चाहिए. इतना दूर आया है मेघालय में, ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट मेघालय में. बाय द वे ब्रेक पैड्स तो मेरा आ रहा है. शुड कम टुमारो टू गुवाहाटी. ऑर्डर कर लिया मैंने. मीनवाइल हैव यू एंजॉय द वाटरफॉल्स. Oh, they can see a bunch of butterflies there. How cool. Check this out. Whoa. Check this out. There you go. वहाँ से गिर के आता है and this is where it goes. I can stay here all day guys, all freaking day. This is so beautiful man. I can stay here all day. यहीं बैठा रह सकता हूँ, ये जगह बैठने का भी दिया हुआ है. Just sit here and enjoy the view. So much peace and so much quiet here. But यार फ़ोन नेटवर्क नहीं है, मज़ा नहीं आएगा. काफ़ी लेट हो रहा था, so I decided to head back to Zostel. अगले दिन प्लान था डॉकी रिवर जाने का, which is apparently the cleanest river in India. जो सुनकर थोड़ा गड़बड़ सा लगा. Cleanest and India? कुछ तो गड़बड़ है. But more on that in the next episode. But before I reach Zostel, I decided to check out a very famous place on the way. This is the famous ML05. बहुत सुना है इसके बारे में, और I'll try it out because it comes on the way to Cherrapunji. Check out the pine trees, guys. It's so beautiful, man. खाना तो अच्छा था ही, प्लस यहाँ के इंटीरियर्स भी काफ़ी नीट है. और अगर बाहर पार्किंग फुल हो जाए, यू कैन ऑलवेज पार्क राइट इन हियर. The number of times I've gone off-road is on this trip, it's not even funny, man. But I love it. Cherrapunji was epic fun, पर एडवेंचर तो अब शुरू हुआ है.